हेलो फ्रेंड्स वेलकम्स टू एबीई इंग्लिश क्लासेस यही चैनल रे आमे एसएसबी पीजीटी रो कोर्स सिलेबसटा डिस्कस करवा एंड इवन सब सिलेबस रे जहाँ जहाँ अच्छी रेगुलरली मु किछि ना किछि वीडियो पोस्ट करिया को ट्राई करिवि एंड किछि किछि एमसीक्यूज भी साइड बाय साइड आमे प्रैक्टिस करवा खाली कोर्स रो सिलेबसटा सार देले हबनी सेतरे बहुत किछि जिंस अछि जोटा कि हमको थ्रू एमसीक्यूज रे भी बहुत किछि नॉलेज मिलिबो आ एसएसबी पीजीटी क्रैक करिया पे बहुत इजी हबो। तो आज किछि क्वेश्चन सारिबा। William Blake's Song of Innocence came out in the year 1789. ତାଙ୍କର Song of Innocence ଆସିଲା 1789 ରେ। Blake's Song of Innocence published ହେଇଥିଲା 1794 ରେ। Which of the following was Blake's first volume of poem? ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲା କନफ्ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ପୋଏମ୍ ବ୍ଲେକର କୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଏଟିକାଲ ସ୍କେचेस। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट एपियर्स इन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो जे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट एटा तांगर कोड राइटिंग रु आस्थिला सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ब्लेक डिक्टम दैट मिल्टन वाज ए ट्रू पोएट ऑफ एंड द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट एपियर्स इट। ओके एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी मन रखिबा जे मिल्टन वाज ए ट्रू पोएट of and the devil party without knowing it appear in the marriage of heaven and hell। ए लाइन टा कोटेशन टा आस्थिला the marriage of heaven and hell। without contrary no progression appeared in Blake। to generalize is to be fool appeared in Blake। Blake को राइटिंग रही एटा आस्थिला to generalize is to be fooled। to discard is to kill appear in the marriage of heaven and hell। The lyrical ballad was published in 1798। एटा रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार एटा रिपीट हेची तमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडा को चेक करि परिबो जोथि के एटा भी रिपीटेडली आसी 1798 एंड मु कहिबा भूली जाइतली एटा हमरो रोमांटिक एज ऊपर किछि किछि क्वेश्चंस अछि रोमांटिक एज रो ही क्वेश्चंस। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एटा समस्ते जानी थिबे। माइकल ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज इंक्लूडेड लेटर इन लिरिकल बैलेड एटा मन रखिबा द माइकल तंग राइटिंग जोटा कि बहुत लेट रे इंक्लूड हेतला लिरिकल बैलेड रे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज ए पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड एटा एई सब पोएम भितरु कोटा गोटे पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड रे थिला सेटा होसी टिंटन एबी। ब्लिस वाज It is that down to be alive, but to be young was very heaven। These lines from the Wordsworth refers to French Revolution। The important question mone rakhiba bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven। These lines from Wordsworth refers to French Revolution। The Prelude of Wordsworth was published in 1850। Keats' statement that we hate poetry that has palpable design of us is said in relation to Wordsworth। And never turn a stone appeared in which poem? These lines appeared in Michael। Written by whom? Written by William Wordsworth। Wordsworth's first publication was Descriptive Sketches। Okay? Remember it, Wordsworth's first publication was Descriptive Sketches। For whom did Browning says, for a handful of silver he left us? Browning ए लाइन टा कहितले सेंटेंस टा ए कोटेशन टा देइतले विलियम वर्ड्सवर्थ पय। Who defined poetry as a spontaneous overflow of powerful feeling is written by Wordsworth। Who among the following still hear the still sad music of humanity? Eta Wordsworth। To me the meanest flower that blows can give a thought that does often lie too deep for tears। These lines are from Immortality Ode। Again a line sentence ta mone rakhiba to me the meanest flower that blows can give a thought that does often lies too deep for tears। These lines from Immortality Ode।
Who launched the newspaper The Watchman for Converting Humanity? Coleridge. Who wrote the poem The Rime of the Ancient Mariner? Coleridge. Rime of the Ancient Mariner बहुत important poem आ जो कि बहुत important lines गुड़ाक अच्छी मुझे कॉलेज को ऊपर क्लासेसटा देवी वीडियो शेयर करी से देखिए बहुत important lines गुड़ाक अच्छी जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत important. Which of the following poems of Coleridge uses the myth of Limia and vampire? That is Christabel. Okay. Which of the following poem of Coleridge uses the myth of Limia and vampire? That is Christabel. The phrase starlit dome and road to Xanadu appear in which poem? That is Kubla Khan. Who wrote Biographia Literaria? Biographia Literaria written by S.T. Coleridge. Which work of Coleridge among the following on the subject of philosophy aids to reflection? Okay, aids to reflection. Literature on Shakespeare appear in posthumously. Which poem of Byron make him famous overnight? That is Child Harold. Okay. एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो बहुत डीप क्वेश्चन अच्छी which poem of Byron make him famous overnight? That is Child Harold. She walks in beauty like the night appear in. Okay, ए क्वेश्चन टा आंसर टा मु चाहिबी जे समस्त कमेंट सेक्शन रे देबे. नेक्स्ट क्लास रे मु जेतेबेले क्वेश्चंस करिवि एटा 30 क्वेश्चन अछि देछि एंड इवन बहुत क्वेश्चन अछि जोटा कि रेगुलरली मु 30 या 40 क्वेश्चंस वेरे समस्त को प्रोवाइड करने को ट्राई करी. तो आ क्वेश्चन टा मु निहात भावे कमेंट सेक्शन रे देखिबी. थैंक यू.